Hi, Assalamu alaikum. I'm back again with another video. Today I've got these. So we are gonna make something for the fridge holders, right? So I just mark it down. Iska loop to hai already. I've got a button here. I'm gonna put a button. Or let's get started. I've got these two buttons. कोई भी बटन चलेगा, किसी भी कलर का चलेगा. तो ये है. I hope you all are doing well. Everything is fine with you guys. अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, एक दूसरे का ख्याल करने वाला बनाए. और बस ये है. So this is how we're gonna do it. It's so easy. कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है. बस आराम से हो जाएगा. ये आपने सिर्फ बटन अच्छे से लगा देना है ताकि वो फिक्स रहे और हिले जुले नहीं अपनी जगह से. मुझे ये किसी ने हाउस वार्मिंग गिफ्ट दिए थे, तो मैंने कहा कि हम इसे यूटिलाइज़ कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास और भी मिट्स हैं और मिटन्स हैं और कवर्स हैं और किचन टॉवल्स वगैरह हैं. Like some of my friends and everybody, those who are sending me gifts. That's very kind of you guys. I truly appreciate it. गिफ्ट चीज़ों से कुछ नहीं होता, बस इट्स जस्ट दैट थॉट दैट काउंट्स कि आप मेरे बारे में सोच रहे हैं और इतना ख्याल कर रहे हैं. सो दैट मीन्स अ लॉट टू मी. एंड ट्रस्ट मी यू गाइस, इट्स लाइक so overwhelming. So this is how we do it. ये बटन टन गया है इसमें. तो we're under the button. ये इस तरह से हो जाएगा, right? Just see. और अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप टॉवल भी लटका सकते हैं आराम से. अगर आप इसे रैप कर दें और बीच में इसके टॉवल लटका दें तो आपका ये स्टैंड हो जाएगा कि आप ओवन के ऊपर आप इसको जस्ट टॉवल हैंग कर लें. सो दैट इज़ अनदर वे ऑफ डूइंग इट. I was just talking to somebody day before yesterday and they were like, okay, you have got some serious health issues sometimes, so why don't you complain? So my response to it was that के भाई मुझे तकलीफ़ मेरे अल्लाह ने दी है और मेरी तकलीफ़ भी मेरा अल्लाह ही दूर करेगा. तो क्या फ़ायदा है इसमें रोना धोना चीखना चिल्लाना पूरे जहान को परेशान करने का, और जबकि कोई मेरी हेल्प कर भी नहीं पाएगा इसमें. क्योंकि जो आपको तकलीफ़ हो रही होती है वो आपको खुद ही को फेस करनी होती है, आपको खुद ही को बेयर करना होता है वो पेन. एंड इट वॉज दैट वो इस बात पे बोला गया था मुझे. मेरी दोस्त ने मुझे बोला कि भाई क्यों नहीं बोलती हैं, आपको बोलना चाहिए. तो मैंने उनको बताया कि भाई देखो, अब एक तकलीफ़ आई है तो उसे दूर भी करना है. अब हम गिर गए थे, घुटना टूट गया था, चीज़ें हो गई थी, तो अब उसको ठीक भी करना है, जाहिर सी बात है. तो अब उसको ठीक करने के लिए एक और सर्जरी होनी है. तो ऑफ कोर्स दैट इज़ गोना बी अ लिटिल टफ फॉर मी, बट कुछ कर नहीं सकते हम उसमें. और अल्लाह तकलीफ़ दे रहा है तो अल्लाह ही दूर भी करेगा. तो एंड यू गाइज नो दैट हाउ माई तवक्कल इज़ कि मैं समंदर के बीच में भी होंगी तो मेरा अल्लाह मेरा रास्ता निकालेगा. सो दिस इज़ हाउ आई थिंक एंड डू थिंग्स. मैंने गलती से मोटी वाली सुई उठा ली है. It's getting a little tougher for me to sew it in this. लेकिन हो जाएगा, कोई बात नहीं.
this is a very kind and humble advice for you all also, that if something comes and you seem like कि भाई ऐसा है कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कुछ आसानी नहीं हो रही है, ट्रस्ट मी यू गाइस, अल्लाह ताला बहुत बड़ा कोई रिवॉर्ड देने वाले होंगे आपको, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट अल्लाह ताला इज़ प्लानिंग फॉर यू, राइट? सो दिस इज़ इट, and so we are good to go now. We are gonna do it and show it to you how it looks. So this is how we're gonna do it, right? I'll just wrap it around like this and fix it here, right? आप चाहें तो इसे डबल भी कर सकते हैं, ऐसे हो जाए. Like this one is here on my microwave oven so that it doesn't get dirty. So this is how it looks. I'll soon in the next video, inshallah. You guys, till then, take care. Lots of love to everybody. Take good care of your loved ones, and always remember, your little act of kindness can make a whole lot of difference. Toodles and lots of love to everyone.